Good morning, children. Today we are going to start a new lesson, that is lesson number 14. The heading is air, means we are going to learn about air. Earth is surrounded by a very large blanket of air which is known as atmosphere. So we are going to learn about the air. Earth is surrounded by a large blanket of air that we can feel. This is known as atmosphere. The survival of all living beings on earth is possible due to the presence of atmosphere. The atmosphere is there, air is there, that's what all the living beings including plants, animals and plants, we all are survival here because of the atmosphere. Atmosphere provides us the air necessary for breathing. Also it protects us from the harmful effect of the ultraviolet rays received from the sun. Because of the atmosphere, the temperature on the earth is livable. Means the atmosphere provides us air for breathing. We are getting oxygen from air, and also it protects us from the harmful rays of harmful ultraviolet rays received from the sun से जो ultraviolet rays आते हैं उसमें से हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं एटमॉस्फेयर. एंड दिस एटमॉस्फेयर is there, that's what the temperature of the earth is maintained by the atmosphere, and it is livable. सभी रह सकते हैं ऐसे एक टेम्परेचर में अर्थ रहने का रीज़न है एटमॉस्फेयर. So the thickness of the atmosphere cannot be calculated as there is no sharp boundary between the atmosphere and outer space. We cannot count the thickness of the earth, thickness of the atmosphere. कितना thickness है atmosphere को, एयर का thickness क्या है ये हम काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज एटमॉस्फेयर के ऊपर आउटर स्पेस रहते हैं. कहाँ पर वो प्रॉपर डिविजन होते हैं दैट वी कैनॉट see. The atmosphere is held to the earth due to its gravitational force. The air is denser near the earth's surface and it gets thinner as one goes upward. So the atmosphere is, the air is denser. हमारा जो अर्थ में अर्थ के सरफेस में हम जो रहते एरिया में ये डेंसिटी ज़्यादा है, एंड जैसे हम ऊपर जाते हैं इट गेट्स थिनर. And there is a continuous flow of energy within the atmosphere and between the atmosphere and earth surface. एक एनर्जी हमेशा कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी रहते हैं एटमॉस्फेयर में, एंड अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर में भी रहते हैं. दिस एटमॉस्फेयर इज हेल्ड हियर बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ. अर्थ का जो ग्रेविटी की वजह से एटमॉस्फेयर वैसा ही एक ब्लैंकेट करके ब्लैंकेट जैसा अर्थ के ऊपर हमेशा रहते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द composition of the atmosphere. Means atmosphere में क्या क्या है. First one is that two main ingredients of atmosphere are nitrogen and oxygen. Okay, air is a mixture of gases with nitrogen and oxygen. Nitrogen 78% है and oxygen 21% है. Then 1% is remaining. Other gases can constitute 1% of the atmosphere, out of which argon is present in 0.93%, while trace other gases like carbon dioxide, ozone, helium, this all we can also present in the air. Air में not only the nitrogen and oxygen और भी other भी gases है, like carbon dioxide है, ozone है, helium है. Then water vapor is there, and dust particles also, tiny dust particles also present in the atmosphere. And while human beings inhale oxygen from atmosphere during the respiration, some amount of nitrogen also goes into the lungs, which come back as such during exhalation. So हम लोग जब ऑक्सीजन लेते हैं उस समय में थोड़ा नाइट्रोजन भी हमारे अंदर चले जाते, वो हम बाहर जो एक्सेलेशन करते समय वो निकल जाते.
Nitrogen is an essential element required for the survival of plants. Plants need nitrogen to grow. So plants cannot take nitrogen directly. So some bacteria that live in the soil and roots of the some plants convert atmospheric nitrogen into the form that can be taken by plants. Plants को nitrogen बहुत ज़रूरी है, but plants cannot nitrogen directly नहीं ले सकते. उसमें सोइल में सम बैक्टीरियास या और रूट्स ऑफ प्लांट्स में सम बैक्टीरियास रहते हैं, वो कन्वर्ट करके नाइट्रोजन प्लांट्स को देते हैं. एंड प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. दस बैलेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज मेंटेन्ड इन नेचर. प्लांट्स हमको मालूम है फोटोसिंथेसिस के समय में ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. वो हमारे लिए अच्छा है कि ऑक्सीजन हम लेते हैं. दस बैलेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज मेंटेन इन नेचर. इफ वी कट ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज या फॉरेस्ट, then balance get disturbed. Carbon dioxide is an important ingredient used by green plants to make their food. आपको भी ये बात मालूम है, फोटोसिंथेसिस के समय में थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड दे आर मेकिंग फूड. सो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट ए ग्रीन हाउस इफेक्ट by trapping the heat radiated from the sun. ये कार्बन डाइऑक्साइड सन की जो हीट को ट्रैप करके रखते हैं, रिलीज नहीं करते. ये है ग्रीन हाउस गैस. So if the amount of carbon dioxide increase in the atmosphere due to burning fuels, the heat retained increase in the temperature of the earth. यदि ज़्यादा जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल वगैरह की वजह से फैक्ट्री में बर्निंग होते हैं एंड इवन व्हीकल में फ्यूल बर्निंग की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होते, तो हीट वो ट्रैप करके रखते. सो इसकी वजह से अर्थ की टेम्परेचर इंक्रीज होते. दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. As a result of global warming, weather and climate of the earth are changing. Okay. Then the next topic is structure of the atmosphere. There are 5 different layers in the atmosphere and the thin buffer zone between each of the 2 layers. So there are 5 layers in the atmosphere. The 5 layers are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. These are the 5 layers of the atmosphere. First one is troposphere. It is the lowest layer of the atmosphere. Its average height is 13 km and it is rich in the air we require to breathe. All human activities take place in this layer. All weather phenomena like clouds, rainfall, fog, storm, etc. occur in this layer. Water vapor and dust particle are found in this layer. This troposphere means the lowest layer of the atmosphere. हमारा जो पास है एटमॉस्फेयर की वो है ट्रोपोस्फियर. वहाँ पे क्या रहते हैं, क्लाउड्स, रेनफॉल, फॉग, स्टॉर्म, ये सब ट्रोपोस्फियर में होते हैं. ट्रोपोस्फियर की जो हाइट है अर्थ से 13 किलोमीटर हाइट है. यहाँ से 13 किलोमीटर अबव है. सो फ्रॉम अर्थ टू 13 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर रहते हैं. इधर जो बारिश वगैरह होते हैं वो ट्रोपोस्फियर में होते हैं. एंड वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल ऑल्सो आर देयर इन ट्रोपोस्फियर. एंड दिस लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एक्सेसिव हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड कीप्स द अर्थ सरफेस वार्म एट नाइट. बिकॉज ऑफ दिस ट्रोपोस्फियर हीट को वो क्या करते हैं, जो ज़्यादा हीट है उसमें से हमको प्रोटेक्ट करके रखते दिस लेयर ट्रोपोस्फियर ड्यूरिंग द डे टाइम में. एंड इट कीप्स द अर्थ सरफेस वार्म एट नाइट. सो ट्रोपोस्फियर इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ atmosphere. Second is stratosphere. It is lies above the troposphere and it is extended up to 50 kilometer above the mean sea level. So अर्थ से 50 किलोमीटर तक है. दैट इज स्ट्रैटोस्फियर बोलते हैं. सो ट्रोपोस्फियर से 13 किलोमीटर तक है, स्ट्रैटोस्फियर 50 किलोमीटर अबव है. सो इट इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स. स्ट्रैटोस्फियर में क्लाउड्स नहीं है, वो सब ट्रोपोस्फियर तक क्लाउड्स सब ख़त्म है. ट्रोपोस्फियर तक ही है क्लाउड्स, फॉग, रेनफॉल सब कुछ.
and it is almost free from clouds and associated weather phenomena. The movement of the air is almost horizontal. It contains ozone layer which protect us from the ultraviolet radiation. Lower part of the layer is most suitable for flying jet aeroplanes. So this layer में ओजोन रहते हैं, this stratosphere में, that is protect us from the ultraviolet radiation from the sun. So ഇത് ट्रोपोस्फियर में इवन जेट फ्लाइंग उसका लोवेस्ट पार्ट में एरोप्लेन्स एंड जेट ये सब फ्लाई करते हैं स्ट्रेटोस्फियर में, दैट इज़ द सेकंड layer of the atmosphere. Okay, it's enough for today. Tomorrow we will be studying about the weather and climate. Not only that, the remaining layer of the atmosphere, this also we'll see on tomorrow. Okay, thank you.